या तो देखो पुराने जमाने में ऐसा भी होता था, करेक्ट. So we see that how in olden times this alchemy was used and such symbols were used when people were not knowing. तो कुछ तो करना था तो कुछ तो करते थे वो लोग. बराबर ना? Something they wanted to do and then something they were doing with that. Okay, so it was like that. And they came up with this, correct? Right? They came up with this. These are all symbols which you are seeing now here. Correct. And there is a lot of history also behind there. Correct? Behind this alchemy, there is a history. Correct? How this alchemy came and how in olden times people were doing research. Correct? What was the techniques they were using, right? And in many places you will find that history also this was taught, right? History was taught, correct? सर बट ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. Complex system means that only. Correct, like that. So we'll just now try to have a look at what was going on in that. Okay. ओके मुझे ये नहीं समझ रहा कुछ. सर Explain me, please. सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो? Just a minute. Stories weren't just mystical misers. Okay. Able to hear now? Yes sir. Yes, sir. यस सर. We will now go into some history of alchemy. Okay. We'll see how it. Stories, charlatans Sir, in fancy alchemy robes promised to मतलब क्या? सर मुझे नहीं समझा, वो स्लाइड ही नहीं समझी. कौन सा? पीपीटी में मैं का पहली स्लाइड. कौन सी, ये वाली? हाँ इसमें अरे पहले गोल्ड को अभी एयू लिखते हैं ना, तो उसमें ये सिंबल यूज करते थे. एक गोल बना के उसमें डॉट लिख देते थे. कॉपर को वैसा सिंबल इस्तेमाल होता था, प्लस साइन और ऊपर गोल. सर तो फिर एक रैंडम लिया तो उसका क्या होगा, मतलब जिंक का क्या होगा? वो हमको नहीं पता ना, वो उनको पता था. उन लोगों ने बनाया था ऐसा सिस्टम, अपने मन से उन्होंने बना दिया था ये ऐसा कुछ सिस्टम. सर फिर अब हम वो फॉलो क्यों नहीं करते, हम दूसरा क्यों, मतलब हम तो ZN और वैसे यूज करते हैं, ऐसे सिंबल्स नहीं करते. वो हम देखेंगे ना कि कैसे टाइम के साथ इनको खारिज कर दिया गया. तुम पहले साइकिल इस्तेमाल करते, तुम पहले खिलौने, प्लास्टिक का खिलौना इस्तेमाल करते थे, है कि नहीं, बचपन में? हेलो, हाँ सर. हाँ करते थे कि नहीं? हाँ अभी करते हो क्या? आदि हाँ सर करते नहीं. हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल. अभी करते हो इस्तेमाल प्लास्टिक के खिलौने? कम नहीं, करते हैं, करते हैं, मतलब करते हैं पर कम. करते हैं लेकिन बहुत सर ज्यादा नहीं बैडमिंटन बैडमिंटन बहुत तुम खेलते हो क्या वो डॉल से? लिमिट खेलते हो क्या? अभी तुम नहीं, डॉल नहीं. के साथ खेलते हो क्या वो? नहीं सर, अभी नहीं, खिलाने बट नहीं. बैडमिंटन वगैरह
हमारे स्पोर्ट गेम्स में तो और अभी तो सिर्फ पढ़ाई का जमाना बाकी है, करने और सिवा सर होता क्या है? रिमोट कंट्रोल प्लास्टिक होता है। क्या क्या क्या? सर पर रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स, रिमोट कंट्रोल कार, ड्रोन्स। सर मतलब अरे अभी इस्तेमाल पेन, मतलब पेन में सबसे ज्यादा मतलब प्लास्टिक यूज होता है, मतलब हमारे डेली लाइफ में तो, क्योंकि हम पेन मतलब जो भी कटर बिटर यूज करते हैं उसमें भी कवरिंग्स होती है प्लास्टिक की। टॉपिक भटक रही हो तुम। मैं बोला उसको, आदि शाह मुद्दा को बोल रहा हूँ कि तुम बचपन में प्लास्टिक का खिलौना खेलते थे, मिकी माउस के साथ खेलते थे कि नहीं? आदि मुद्दा, हाँ सर। अभी खेलते हो क्या उसके हाँ, साथ मिकी सर माउस? आपने मुझे नहीं और सर। आनंद को मिक्स कर लिया। आदि शाह। किसने पूछा था वो क्वेश्चन? किसने पूछा था? मैंने पूछा पर आपने शाह लगा दिया आगे। हाँ ठीक है। आदि, तुम बचपन में खेलते थे मिका, अभी खेलते नहीं हो, क्यों नहीं खेलते? क्यों अभी छोड़ दिया तुमने ना? तो वैसे ही पहले इस्तेमाल करते थे ये खिलौने, अभी करते के खिलौने इस्तेमाल ये, मतलब ये सिंबल्स अभी इस्तेमाल नहीं करते। तो वी आर सीइंग द हिस्ट्री बेटा, समझो बात को मेरे। हाँ सर, समझा। के साथ साथ हमारे मतलब नीड्स भी चेंज होता है ना। हाँ करेक्ट करेक्ट, गुड। सर होता है, मतलब अगर हम ये क्रॉस अगर ऊपर लगा दे गोल के तो वो कॉपर के वजह सिल्वर एंटीमनी हो। सॉरी, हमें लर्न करने हैं सब सिंबल। नहीं करने, क्वेश्चन बहुत पूछते हो और सुनते कम हो तुम सब लोग। सॉरी सर। ठीक है, तो हिस्ट्री हम लोग देखते हैं थोड़ा, है ना? सुना अभी चुपचाप, ठीक है? बड़बड़ मत करो। To turn lead into gold, but real alchemists weren't just mystical misers, they were skilled experimentalists backed by theories of matter. And they played a huge role in the development of our knowledge about one of our fundamental questions. What is stuff? Do chemists today spend a lot of time trying to turn lead into gold? No. But in part, they are inheritors of a wealth of knowledge created by alchemists who were trying to turn lead into gold. Why did they keep doing that? Did they all really think that it would work? Was it some science experiment or religious ritual? Yes, all of those things. Today, we're gonna meet some alchemists and consider just what the heck they were doing all day with their metals and how they saw तो एल्केमिस्ट ऐसे लोग थे कि जो अपना अपना मेटल था उनको वो गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे वो लोग। to understand stuff. The word alchemy, which is where we get the word chemistry from, is a bit of a mystery. It might mean the Black Earth, symbolizing Egypt, but it might not. Either way, all of these words were used in Europe before 1600 to describe the same system. Let's define alchemy as a way of thinking philosophically about stuff by changing it. This included older astrological ideas alongside new ones derived from experiment and observation. Alchemy parallels the scholastic medical tradition we looked at last time. Both systems spanned across Eurasia and relied on books. But the alchemists had different social norms or ideas about how someone creating knowledge should act. Alchemists did publish books, but typically they encoded their philosophies in complicated allegories or stories wherein the characters and actions stand for something other than what they appear. This essentially rendered whole alchemical systems secret except to their own friends. They used code words called dechnomen, so tin might literally mean the metal tin in one book, but serve as a code word for silver in another. The books were illustrated, but many of the images were symbols masking their true meanings. The good and the bad thing about the dechnomen system was that anyone could read any proto-scientific treatise on what is stuff and come away with almost any बच्चों समझ रहा है क्या कुछ? नहीं सर। तर खरं म्हणायचं तर काहीच कळत नाहीये. सर वो बोल भी कैसे रहे? थोडा कळतंय पण स्पष्ट नाही कळत त्यांना काय. सर कळतंय. ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी। ओके सर। मम्मी हमेशा किचन में क्यों रहती है? सर आपने स्क्रीन शेयर किया है?
Okay, one more we'll try to see. in the Middle Ages, but it has existed in one. Okay. ठीक है. I had one nice video. Chemistry. Scientists who mock in Greece adhered that from mystery it had many pursuits like making more famous pursuit obtaining perfection of Wait. I had seen one nice video. I'm not able to find it. Hmm. ठीक है. with access to secret knowledge Very passed good. down. Okay, now I think we'll understand this now at least. Were they magicians concocting elixirs and potions? Were they magicians concocting elixirs and potions? Were they occultist mystics with access to secret knowledge passed down from ancient times? Or were they charlatans, tricking gullible people into believing they could bestow riches and immortality for the right price? Well, none of the above really, though all of those descriptions do carry a kernel of truth. Alchemy was a proto-scientific system that sought to understand, transform, and purify natural materials. It started समझ लगा. हो सर. हो सर. त्यामध्ये अल्केमी काय जादूगर वगैरे नव्हते. पण ते काय होतं, है ना, ट्रान्सफॉर्म अँड प्युरिफाय नॅचरल मटेरियल्स. करेक्ट. in Egypt. When exactly, no one knows for sure. The details of Egyptian alchemy are also unknown to us, as most of the alchemical texts from Egypt have been lost. From Egypt, the system spread around the Old World, through China, India, the Middle East, and Europe. Because of this, alchemy was a diverse system, changing from location to location, as well as changing through time. Different alchemists focused on different things. In China, alchemy was tied to Taoism, and by extension, traditional Chinese medicine. Indian alchemists also focused on medicinal alchemy, while those in the West and Middle East had different goals, those of which we will be focusing on in this video, since the details of Western alchemy are known to modern scholars. The problem with Western alchemy is that these alchemists liked to write down all their thoughts, theories, and experiments in strange codes and creative analogies. This practice is the reason modern scholars are still unsure exactly of what alchemists were up to. These symbols and codes connected alchemy with astrology. Many astrological symbols and ideas were also used in alchemical texts. The 7 planets, for example, corresponded to 7 metals. The sun stood for gold, the moon for silver, iron for Mars, tin for Jupiter, copper for Venus, lead for Saturn, and Mercury, well, obviously, for Mercury. Alchemists also subscribed to the Aristotelian idea of the 4 classical elements: earth, fire, air, and water. They eventually added 3 more substances to that list: mercury, sulfur, and salt, which they believed were combined to create compounds, such as metals and even the bodies of living things. All of this secrecy, allegory, and mystical thought contributed to the modern view of alchemists as sorcerers or magicians. Whether alchemists used this magical language to simply hide away their knowledge, or if they really believed in the spiritual and supernatural connections to their work, remains to be seen. More than likely, it was a mixture of both. Okay, so what do we know? In general, alchemy had 3 main goals. The first was the transmutation of base metals like lead into precious metals like gold. This पहला गोल क्या था कि बेस मेटल जो भी रहेगा, लेड वगैरह, याला तुम्ही कन्वर्ट करा कशामध्ये, गोल्ड. तर त्यांचे प्रयत्न तेच होते की या मेटल्सला गोल्ड मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं. ठीक आहे.
process was called Chrysopoeia. The second was the manufacture of the elixir of life, able to stave off death as well as cure all illnesses. And lastly, the creation of an alkahest, or a universal solvent, able to dissolve anything, even gold. How they thought they could ठीक है, तो दूसरं काही कामाचं नाही. तिसरं अल्काहाइस्ट त्यासाठी काही पण डिझॉल्व करू शकेल ते, है ना, आणि गोल्ड पण. contain such a substance eludes me, but I digress. All of these goals eventually got tied to the creation of the Philosopher's Stone, which we'll get into in more detail later. It might seem strange to us in the modern world to think of sciences as having tangible goals like this. Nowadays, sciences are simply the studies of different natural phenomena. Physics has no goals other than the understanding of the fabric and forces that make up our universe. Obviously, physics, as well as all other sciences, have plenty of practical application, but it would be strange to say that the point of physics was to make quantum computers. So how is it that alchemists thought these goals were possible? Did they come out of nowhere? Well, alchemy in the beginning didn't have these exact goals. Alchemists came from the likes of metallurgists, doctors, and natural philosophers that were simply trying to understand the world around them. But alchemists, as well as all pre-scientific people, relied just as much, if not more, on the wisdom of the past as they did on observation. If something was written down in a book by a smart person from long ago, those ideas would usually be taken for granted. So, alchemists were synthesizing both their own observations and experiments with the ideas of the likes of Aristotle and Plato, as well as from religious or philosophical traditions like Christianity. A good example of this synthesis is the transmutation of lead into gold. It seems like a far-fetched idea to us, but when metallurgists would heat metal ore, the ore would change color, and different compounds would appear in the process. We know now that these reactions are because of the impurities found in raw ore, but alchemists at the time thought it was evidence of the transformation of the material. And of course, chemical transmutation is a real and natural phenomenon, and we see the transformation of things in nature all the time. It's no wonder, really, that alchemists thought there would be a way of using this transformative aspect of nature to their advantage. Chrysopoeia was also seen as a mirror unto the process of Christian salvation. The transformation of lead into gold काही समजलं का नाही? सर समजलं थोडं सर. हो सर समजलं. नक्की? सर इसमें से आप क्वेश्चंस देने वाले हो क्या एग्जाम्स में, मतलब टेस्ट में? नहीं नहीं. अरे पर इसमें तो स्टेट्स ऑफ मैथ. No, this is something extra for you. Okay. So that was the thing, correct? Mainly ट्रांसफॉर्मेशन वो लोग करते थे. बाकी इधर से तो कुछ हमको उपयोग नहीं है. मेनली क्या होता था? ट्रांसफॉर्मेशन होता था. Getting my point? ठीक है बच्चों. आया, लिंक आया आज एक्सपेक्टेड. क्या बोल रहे हो? सर पता था आज क्विज थोड़ी जल्दी 1 मिनट में चालू कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और हो गई. सर आप और एक बार लिंक भेज सकते हो? हाँ. थैंक यू. सर आपको मैं दिख रही हूँ क्या? नहीं. थैंक यू सर. तुम्हारा वीडियो बंद है, कैसे देखोगे तुम? अरे सर नहीं, उसमें क्विज में नाम दिख रहा है सिर्फ, तुम नहीं दिख रहे. ओके सर. 6 लोग आए बस. सर 1 सेकंड रुको प्लीज. सर 1 सेकंड. चालू करो मैं. 3, 2, 1. सर 2 मिनट. अभी 1 मिनट, अभी 2 मिनट हो गए. अरे यार ये हो क्यों नहीं रहा? क्रोम सर चालू नहीं हुआ. क्रोम सर मेरा क्रोम ही उड़ गया. वेरी गुड, वेरी गुड. सर मैं नहीं खेल सकता, सॉरी. अरे इतने जल्दी हार मान गए? क्या हुआ क्या सर सर मेरा क्रोम ही नहीं है इधर, मैं कैसे आऊँ? क्रोम नहीं है तो ड्रोन लेके आओ. माइक्रोसॉफ्ट
सॉरी वो मोबाइल से करोगे माइक्रोसॉफ्ट एज। अरे वो लिंक पे क्लिक करो। हाँ मोबाइल पे जाओ ना। हाँ सर आ गया, 1 मिनट रुको। सर आपको मेरा नाम दिख रहा है क्या? कौन हो तुम? हम्म, अरे यार ये क्या है मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है? सर? 1 सेकंड, मैं नाम डाल रहा हूँ। पता है तुम्हारा नाम? सर इसको नहीं पता ना। हाँ सर आ गया, ओके गुड। आ गया सर। वन मोर इज नॉट कम, वो इज नॉट कम। ठीक है, चालू किया जाएगा। 3, 2, 1 गो। 3, 2, 1। सर ये हर वक्त का सेम क्वेश्चन है सर। सर आप सेम सेम क्यों डालते हो? नहीं बाबा, अलग है ये। सर क्वेश्चन बहुत बार पूछते एग्जाम, तो बार बार आने चाहिए। फिर भी सबका सही नहीं आता है। सर टारगेट, हाँ, सर टारगेट, टारगेट 60। ओके ओके सर। टारगेट एंड टाइम पे चेंज हो सकता है, ठीक है? सर, सर आप फिक्स कर लो। ऐसा कुछ नहीं। अभी पता चला एंड मोमेंट में 4 बार लोग 50 पे और 4 और क्वेश्चन और बाकी, तो क्या करूँगा? चेंज करूँगा। वो सर मेरा गलत हुआ, मेरा गलत हुआ, मेरा गलत हुआ। सर ऐसे तो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। हाँ सर। क्वेश्चंस चेंज तो करो। क्या बोल रहे हो? सर ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आप चेंज क्यों नहीं करते? ये वाला? हाँ सर। एक आध रिपीट हो सकते हैं बेटा, ये वाला तो नहीं हो रहा होगा रिपीट, है कि नहीं? हाँ ये नहीं हुआ था, ये नहीं।
सर ये इस क्वेश्चन का तो मुझे आंसर ही नहीं पता था। सर ये भी हुआ था। सर बहुत ही रिपीट हो रहा है। सर ये भी रिपीट। इसी के कारण तो आंसर्स आ रहे हैं। सर मैंने गलती से गलत दबा दिया। सर टारगेट रीच्ड। हेलो 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 सर। सर रिस्पॉन्ड नहीं कर। सर लीव क्या हुआ? सर टारगेट रीच्ड। ओके ठीक है अभी 80 पे जाओ, ठीक है। 75 सर नहीं हो सकता 75 सर। ठीक है विल ट्राई। सर 80 तो इम्पॉसिबल है।
75 होने की शक्यता है। सर इस क्वेश्चन को कुछ सेंस ही नहीं है, मतलब सर मैंने तुक्का लगाया। हाँ सर। पता नहीं चल रहा। अगर सर इसमें तुक्का लगाने जैसी तो ऐसी बातें नहीं। हाँ सर टारगेट रीच होगा 80 का। ये टारगेट रीच। सर टारगेट रीच हो गया 80 का। गुड। सर टारगेट 60। 60 का टारगेट मेरा रीच। भी टारगेट रीच 60। 65 टारगेट रीच। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन टारगेट बाद में चेंज करना है। का टारगेट। टारगेट सर मैंने लास्ट आंसर किया था, फिर भी वो दिखा रहा था कि वो आंसर्ड इनकरेक्टली। हाँ सर मेरा नहीं कैसे शक्य है 100% है करेक्ट आंसर था। तूने ये बाद में किया था लास्ट आंसर सोनारस। हम सबने ये सोनारस ही दिया था 100%। हाँ 100% था। करेक्ट फिर करेक्ट। कैसे इनकरेक्ट आएगा? उसको तो सिर्फ ऐसे- 1 पॉइंट मिला होगा, फिर नहीं उसको सिर्फ 1 पॉइंट मिला होगा, इसलिए ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ओके। सर मेरा रिकॉर्ड है हर बार 60 आता। Yes, very good. Very good. So we'll end now. So we congratulate our toppers. Yes. Anand Shah. Bye sir, have a good day. सर आज का होमवर्क क्या है? सर आज का होमवर्क क्या है? सर बाय सर, थैंक यू। मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ओके बाय सर, हैव अ गुड डे। Okay. Yeah. Thank you very much. बाय सर, थैंक Yes, यू। bye. Have a good day, sir. Bye, sir. Yes, bye.